Hello बच्चों, let's see this question. The question says the binding energy of an electron on the ground state of hydrogen-like ions in whose spectrum the third line of Balmer series is equal to 108.5 nanometers. तो चलिए इसकी solution देख लेते हैं. तो binding energy of electron in ground state will be equal to energy binding will be equal to E naught Z square by N. यहाँ पे N is equals to value 1 है तो binding energy will be equal to E naught Z square होगी. First we'll calculate the wave number of third line. Wave number of third Balmer line is mu is equals to E naught Z square by HC into 1 by 2 square minus 1 by 5 square. तो यहाँ पर E naught Z square by HC into 100 by 21 आ जाएगी. तो अब कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ ऑफ third Balmer line, that is lambda is equals to 1 by mu. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं HC by E naught Z square into 100 by 21. So that will be equal to 19.86 into 10 power minus 26 by energy binding और इंटू 100 बाई 21. तो इसको उल्टा किए बिकॉज वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी थी. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, दैट इज ईबी की वैल्यू, बिकॉज हमें लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, दैट इज 108.5 नैनोमीटर्स. सो यहाँ पर 108.5 इंटू 10 power minus 9 is equals to 19.86 into 10 power minus 26 into 100 by 21 by EB. तो हमें चाहिए थी EB की वैल्यू, so that will be equal to 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये रही हमारी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. I hope you understand it well. All the best.